class 12th chemistry having the different weightage of the marks. So the unit coordination compound is having a 7 marks weightage according to the CBSE pattern. So this type of question means the questions on the stability and on the configuration and on the crystal field theory or balance bond theory will be in 3 marks or 5 marks type questions. So here I wrote one question using crystal field theory. Draw energy level diagrams. Means we have to be draw a diagram for degenerate, for d orbital, and write electronic configuration of central atom or ion and determine the magnetic moment of the given coordination complexes. So this type of questions will be either in a 5 marks or in a 3 marks type questions. So here this is the crystal field theory. In our coordination compound we are having the Werner theory, then we are having the valence bond theory, and we are having the crystal field theory. This question is on the crystal field theory, means we have to be divide the degenerate into T2G and EG. And what is T2G and EG? Let's see and let do the answers to this question. So using crystal field theory. Crystal field theory is saying, I'm just giving a quick recap on that. Otherwise you can subscribe my channel and get my video lecture on this topic. So it says crystal field theory. Crystal field theory is saying the degenerate means talking about the d orbital, and that d orbital are divided into two parts, either for the octahedral complexes we will have this type of division, that is this one is dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and dz square. So this is degenerate or d orbital, which can be divided into two type of energy level on the coming of ligand. One ligand will approach, ligand of two types, either it's a weak ligand and either it's a strong ligand. One ligand will approach, then it can be divided into two energy levels for the octahedral or tetrahedral division जो है वो अलग अलग होता है. Because this question is on the coordination number, यहाँ पे 6 है, coordination number is 6 means these are the octahedral complexes. For octahedral complexes, these degenerate divided into T2G and EG, and यहाँ पे जो हमारे पार्ट्स आ जाएंगे, that is dxy, dyz, dzx, and this is dx square minus y square, and this one is dz square. So this is a type of or means we can say bifurcation of the d orbital on the approach of ligand. जब ligand आता है then this will happen. Now if we will take the first R coordination complex अगर हम लेते हैं तो first coordination complex क्या है, that is of iron Fe having the 6 atom of fluorine and it is having a 3 negative charge, means this coordination जो complex है ये negative identity है, having the negative charge on it, coordination complex. तो यहाँ पे जो हमारा fluorine है it is a weak field ligand, तो weak field ligand है and having इसकी जो valency है या oxidation number है it is a -1. First we have to be find out the oxidation number of this central metal atom, because then we have to be write the electronic configuration. It says हमें ड्रॉ करना है एनर्जी लेवल एंड फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो मैं यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेट अज्यूम और लेट प्रिटेंड टू बी x, एंड देन the fluorine is having -1, total 6 atom are there, overall charge is -3. Then we will have this -6 plus minus and that is equal to -3, and x equal to +3, as -3 and a +6 will go there and we will have
oxidation number +3. So in this coordination identity, the iron is in +3 oxidation state. So iron can be written as, ये ground state पे है, तो in ground state इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, दैट इज आर्गन which is having atomic number 18 and then 4s2 and 3d6. This is the atomic electronic configuration, but we have to write the electronic configuration at Fe3 means the third oxidation state. हमें इस ion की oxidation state लिखनी है. So what would be the answer? That is argon 4s0 and 3d5. So this is the answer which is asked by the question. Write the electronic configuration of iron at +3 oxidation state. So at a +3 oxidation state, iron is having argon 4s0 3d5. Now as I said, fluorine is a weak field ligand. If it is a weak field ligand, the crystal field splitting energy, that is CFSE, crystal field splitting energy, is not that much. मीन्स इन दोनों जो यहाँ पे बाइफिकेशन हुआ है उसमें ज्यादा गैप नहीं होगा. सो मीन्स दैट इज क्या हो जाएगा, दिस इज द लेस एज अ पेयरिंग. तो पेयरिंग विल नॉट अकर. यहाँ पे डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर Fe3+ जो हमारा डीजेनरेट लेवल है, इट इज हैविंग 5 सब पार्ट्स. So one electron will be in each level, and as I said कि ज़्यादा difference नहीं होगा. For this energy level क्या हो जाएगा, this is T2G and this one is EG, and single electron will be available because energy gap जो है CFCE, that is इसको हम लोग डेल्टा नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. That is crystal field splitting energy, and P is a pairing. Pairing will not occur as the energy gap is not that much, so electron can be go up easily. So this is the energy level diagram. So draw energy level diagram. I draw this one for first complex electronic configuration. I wrote here, and then now we have to tell about the magnetic moment, the third part. So magnetic moment, normally how we will write the magnetic moment, equal to n plus 2, where n is the number of unpaired electron. So how many unpaired electrons are available here? If your answer is 5, then it's 100% correct. 1 2 3 4 5, we are having a 5 unpaired electron. So magnetic moment will be, that is 5 plus 2, and that is √35. and अगर 36 होता तो 6 बाहर आ जाता, तो 35 है, that is approximately 5.92 बोर मैग्नेटन, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है. So the various questions asked for the complex, first complex energy level diagram I drawed here, and then electronic configuration I wrote here, and determine the magnetic moment of Guilbert coordination complex. So due to the availability of 5 unpaired electron, this complex कैसा रहेगा? This complex is magnetic. This is or paramagnetic. This is a paramagnetic complex having that magnetic moment 5.92, electronic configuration, and here is the energy level diagram. Let's do same for the second complex. The second complex given to us, what is that? Second complex हमारे पास किसका है, वो भी आयरन का ही है. That is with the aqua और water molecule के साथ है. So let's take the second complex, that is Fe second one. अब मुझे होप है कि यू गाइस कैन डू अलोंग विद मी, आप भी कर पाएंगे.
and this is the coordination complex having a 2 plus charge, means this is a कैसा है, cationic identity है, having the positive charge on it. So let's see first of all the coordination oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट प्रिटेंड इट टू बी x, देन x है, वाटर पे कोई भी चार्ज नहीं होता, having a 6 molecule and overall charge is +2. So here the oxidation number of iron is +2. Iron available at the second oxidation state, Fe2 plus पे available है. Now we have to write the electronic configuration for that. So electronic configuration for that iron, electronic configuration क्या हो जाएगा, ऑफ किसका, Fe2 प्लस, क्योंकि ये सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है. आयरन हैविंग एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहता है, आर्गन 4s2 3d6 एंड Fe2 प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है तो Fe2 प्लस क्या हो जाएगा, दैट इज आर्गन 4s0 and 3d6. So this is the electronic configuration for this complex. Now we have to draw the energy level as the coordination number is 6. So we have to divide or degenerate into T2G and EG level. So यहाँ पे जो degenerate है means d orbital है, having sub parts dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and last one is dz square. It will be divided into two parts क्योंकि ये octahedral 6 number है, तो that is why this is the octahedral, and this the lower energy level जो होता है that is T2G and upper one is EG. And how many electrons are here? 6. So Aufbau and one rule is saying first we have to be make a single and then pairing will start, and 6 है तो यहाँ पे this one is a pair. So हम यहाँ पे जब filling करेंगे 1 2 3, as water is a weak ligand, H2 is a weak field ligand. So this is a weak field ligand, so that crystal field splitting energy is less and pairing will not occur. This is the condition here, pairing नहीं हो पाएगी. So यहाँ पे easily पहले single करेंगे और 6 है तो it will be here. How many unpaired electrons are available here? Unpaired electron कितने हैं? 4. So this compound is also क्या है? This is the paramagnetic. Compound कैसा है? Paramagnetic है. And how we will find the magnetic moment for it? That is mu root n plus 2 under root 4 plus 2, that is 6 into 4 24. 5 पे अगर 5 हो 25 होता तो 5 हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता, लेकिन यहाँ पे 24 है. सो अप्रोक्सीमेटली जो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज 4.9, क्योंकि 5 तो हुआ ही नहीं अभी, एंड बोर मैग्नेटम. So this is the all the answers attached to the complex second. इसका एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बना दिया है. ये CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा O. O मींस ऑक्टाहेड्रल, ज्यादा नहीं होगा बिकॉज जो लिगेंड है वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है. सो वी विल हैव ऑल द क्वेश्चन अटैच विद द सेकंड कॉम्प्लेक्स. इस तरह हम अटेम्प्ट कर लेंगे. नाउ द थर्ड वन, थर्ड जो है दैट इज अगेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन. यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो 6 है, मींस जो कंपाउंड है दैट इज ऑक्टाहेड्रल. नेगेटिव आइडेंटिटी है, हैविंग -4 चार्ज ऑन इट, एंड Cn is a strong field ligand.
तो लेट्स सी, अभी हमने दो वीक फील्ड लिगेंड के लिए देखा. लेट्स सी हाउ and what is the difference here when the ligand is a strong field ligand. So let's do that. For strong field ligand के लिए करेंगे पहले सेम हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे बिकॉज वी हैव टू बी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑल द थिंग्स. ये भी आयरन का ही है. वी आर हैविंग Cn here, साइनाइड ग्रुप है एंड -4. दिस इज द नेक्स्ट वन एंड वी हैव टू बी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर जो भी यहाँ पे. और साइनाइड का जो है वो -1 होता है. 6 मॉलिक्यूल है, ओवरऑल चार्ज -4 है. x plus minus -6 equal to -4 and x equal to -4 plus 6 that is +2. So यहाँ पे जो हमारा आयरन है, आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है. आयरन Fe2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe2 plus and that is the argon. 4s0 3d6. This is the electronic configuration at +2 oxidation state. And let's draw the energy level diagram. Degenerate हमने बना लिया है. यहाँ पे 6 नंबर है, मीन्स जो कंपाउंड है वो आपका ऑक्टाहेड्रल है. एंड लेट चेक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन D6. So that is according to of our Hund rule. We will first fill single and then we will do the pairing. ये d ऑर्बिटल और डीजेनरेट हो गया. नाउ वी हैव टू मेक एनर्जी लेवल. यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा बिकॉज जो साइनाइड है इट्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वी हैव टू शो कि यहाँ पे जो CFSE है दैट इज वेरी हाई, मीन्स जो डेल्टा O मीन्स ऑक्टाहेड्रल हाई है. तो हम यहाँ पे पहले सिंगल भरेंगे. अब यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ऊपर नहीं जा पाएगा तो 4th इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ जाएगा, 5th यहाँ पे आ जाएगा और 6th भी यहीं पे आ जाएगा. सो जो हमारा T2G है वो फुली फिल्ड है. T2G फुली फिल्ड है और Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 0. यहाँ पे n इक्वल टू 0 हो गया. सो दिस कंपाउंड वैसे ही कैसा हो गया है, डायामैग्नेटिक हो गया है. और डायामैग्नेटिक है तो इसकी बोर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 होगी. मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम फाइंड आउट भी करते हैं दैट इज n+2 और n यहाँ पे 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 0 हो जाएगी. हमारा जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज ए डायामैग्नेटिक. This is the energy level diagram for this coordination compound and here is the electronic configuration for the iron. And if we have to be write the electronic configuration in the form of T2G and Eg, how we will write? That is T2G6 and Eg0. And here the condition कैसा था that delta not O for octahedral is pairing जो है it is high as compared to pairing, तो pairing will be happened here. So these all the answers attached with these questions and this type of question will come in a 3 or 5 marks because ये bonding है, ये stability है, ये electronic configuration है, magnetic moment है, oxidation या coordination number. This type of question either we will have in a 5 marks or 3 marks type of question.